ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, राइट? फर्स्ट, माय नेम इज़ अनिरुद्ध, and I contribute to animal welfare in Naigaon in whatever way I do, mostly by through population control with along with the VVCMC, uh, and vaccinations, mass vaccinations, that is of rabies, anti-rabies vaccines, with the Worldwide Veterinary Service. अभी कुछ 1:30 या 1:45 हो रहा है, आई गेस। तो हाँ, 1:45 के आसपास हो रहा होगा। एंड मैं क्या है, एंड आई एम हियर समवेयर आउटसाइड, और मुझे बनाने का था लाइक दिस वीडियो आई वांट टू मेक बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू डू विद पीपल्स पैनिक, and now this is about distemper, and I have to be a little quiet, a little subdued because there are buildings around me, and वैसे भी I mean it's weird कि मैं यहाँ पे बैठ के कैमरा में बात कर रहा हूँ, right? People anyways get pissed at people that make videos because it reminds them of TikToks. But ये serious है. This is about distemper, right? This is about cold and distemper in winter now. अभी देखो, मेरे को समझता नहीं है that like, and I was going to post a video that may trigger a lot of people, including professionals. तो वो मैं बाद में करूँगा because it is quite a delicate time to do it. थोड़ा sensitive time है ये because it's winter and then there are cases, and that video has to do with something to do with the cases. It's not directly to do with that but indirectly as well. ये जो मैं भी बोल रहा हूँ ये important है, right? First, my name is Anirudh, and I contribute to animal welfare in Naigaon in whatever way I do, mostly by through population control with along with the VVCMC, and vaccinations, mass vaccinations, that is of rabies, anti-rabies vaccines, with the Worldwide Veterinary Service, and it has been very good. In 1 year I can see the change. मतलब basically एक साल में जो change है वो मैं आपको बताऊंगा. I'll give an update video afterwards. But the entire point is this: right now, having said whatever I've said, uh, कुछ cases है जो recently हुए हैं, क्योंकि एक साल में काफ़ी sensibility improvement हुआ है, and I would say काफ़ी given the timeline. But on a general level, I don't think it's that much, but it can be felt. People are more tolerant towards dogs in my area, Naigaon East, Suntek area. And another thing to do with that is, or to do with what I am saying is, there are less pups, and the problem has shifted from animal haters or neutral people or intolerant people to animal lovers now. ठीक है. But that's a different thing. So that has to that is to show the kind of improvement, the kind of sensibility development that has happened. But having said that about the change in my area and the three things that have caused it, which is sterilization, vaccinations, awareness, ये हमने constantly किया है, right? ये मेरा aim भी था. But अभी कैसे winter है, ठीक है? अभी winter है. And the reason I said all of that is to let you know the context and how that affects the context, because मैं जो भी बोलने वाला हूँ it's going to relate back to that in some way or the other. Okay, understand this. अभी winter है, you have to be ready. कुछ pups मरेंगे, ठीक है? Pups are going to die. The younger the animal, especially I'm talking about dogs, community dogs जो हमारे companions है वैसे भी, तो ये जो the younger they are, the less chances they have to fight cold.
ठीक है. And when it comes to cold, the virus that causes cold, if I'm right in saying this, and I think I am, जो वायरस से कैनाइंस को कोल्ड होता है, डॉग्स को कोल्ड होता है, उससे वो लोग को डिस्टेम्पर होता है. और जो या फिर जो वायरस से हमें कोल्ड होता है, सिमिलर टू दैट वायरस इज़ द वायरस दैट causes distemper in dogs. So one of the first signs that you will check in distemper in dogs, one of the early signs, is phlegm from the nose, discharge from the eyes. ठीक है, बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. उसके बाद उनको ना बॉडी पे स्पॉट्स आएंगे, फिर उनका नाक ड्राई होगा, उनके पॉज ड्राई होंगे, विच इज कॉल्ड हार्ट पैड डिजीज. हार्ट पैड सिम्टम बोलते हैं उसको. So because of that it's also called heart pad disease. It's kind of a second name of, I don't know, or you can just say AK, also known as heart pad disease. Wobbly gait, तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, उन लोगों के हिंड लेग्स गिरने लगते हैं, राइट. And then when the virus reaches the brain, it causes brain inflammation. by the brain में सूजन आती है या छाले पड़ते हैं, kind of that is what the word inflammation means, so I'm using that logic. And उसके वजह से they go into fits, they keep getting fits repeatedly. ठीक है, so that's the last stage. वो पहुंच गया मतलब ख़त्म है. उसके बाद बचना मतलब ना के बराबर ही है. Some dogs do survive, so the prognosis is poor to grave, but वैसा है. Now okay, अभी ये तो हो गया डिजीज़ के बारे में, डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV. The first thing you can do is to do population control. लास्ट ईयर यहाँ पे डिस्टेम्पर के काफ़ी केसेस थे मेरे एरिया में, अब एक भी नहीं है. अगर है भी तो कोरिया वाले, कोई मरा नहीं डिस्टेम्पर से अब तक. आई डोंट नो, मे बी फरवरी तक कोई ना कोई मरेगा, बट ये टाइम लास्ट ईयर आई थिंक एटलीस्ट 2 had died. ठीक है, बट इस बार नहीं हो रहा है इतना, क्योंकि मोस्टली पॉप्स तो है ही नहीं. दूसरी बात ये कि वंस यू गेट देम स्टरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, वैक्सीनेशन हो गया. अब वैक्सीनेशन में भी द रेबीज़ वैक्सीन वॉन्ट डू मच, इट वॉन्ट डू एनीथिंग एक्चुअली. वॉट वर्क्स वंडर्स इज 911. नहीं, not actually that, but that is one thing that you should do to avoid distemper. What works wonders is not 911. You have to do it, but not that. 911 gives you some kind of an assurance कि नहीं होगा, right? मतलब you can say that almost नहीं होगा, but maybe there can be some chances कि हो जाए. होगा भी तो कोरिया, मतलब बचने के chances ज़्यादा रहते हैं. But what works wonders is diet, food, appetite. Appetite होना ही चाहिए. If the appetite is there, right, if food is there, if stress is less, if the interaction with each other and humans is good, it naturally boosts the immune system. अगर स्ट्रेस ज़्यादा हुआ, राइट, अगर स्ट्रेस ज़्यादा हुआ, it's not going to help much. It's actually going to make it worse and bad. ठीक है, so because stress negatively affects the immune system. स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. एपेटाइट शुड बी वेरी गुड, एपेटाइट शुड बी रेगुलर एंड गुड. बट स्वीट डॉग्स है, यू डोंट नो कौन खिला रहा है, कब खिला रहा है, कितने बार खिला पाएंगे, कब तक खिला पाएंगे. सो द ओनली थिंग यू कैन डू इज कीप द स्ट्रेस लो. So this particular video is not really about machhar bada. It's not really about what you can do to prevent. It's just about when you see symptoms, you shouldn't jump to conclusions. पहली बात तो 911 कराने के ट्राई करो, नहीं हुआ तो एटलीस्ट keep like do sterilizations, do vaccinations. That is zoonotic के जो मतलब anti-rabies vaccines. Okay, but so these are the basic things. But अगर 911 नहीं भी हुआ, ठीक है, remember that when symptoms start showing up, 1 second.
back, move back. ये stupid dogs were barking, तो इनको रोकने के लिए आता मैं. So what I was saying is this, that food is the most important thing. If देखो डिस्टेंपर का ना कोई क्योर नहीं है, इट कैन ओनली बी ट्रीटेड सिम्टोमेटिकली. बॉडी फाइट करती है, लाइक इम्यून सिस्टम फाइट्स. सो इवन द ट्रीटमेंट दैट डॉक्टर्स गिव इन जनरल, स्पीकिंग इन लेमैन्स लैंग्वेज, you can only you can support the body. That's it. That's all you can do. Symptomatic treatment रहता है. Now everything changes when it comes to uh, you know dogs in the street. अब street पे, अब जैसे ये dog है, ठीक है, ये जो dog है, ये exactly street का नहीं है, ये इस building का है. ग्लोबल नाम का बिल्डिंग है नायगांव में. सो यहाँ के अभी दीज आर कम्युनिटी एनिमल्स, बट स्टिल दीज आर ऑल्सो एनिमल्स दैट लिव ऑन द रोड. ठीक है. अब इनके स्ट्रेसर्स कितने रहते हैं. दे हैव टू डिफेंड देयर प्लेस, दे हैव टू इंश्योर कि इन लोगों को खाना है. ये देखो अभी ये इस समय भी ध्यान दे रहा है किधर को. सो गाड़ियाँ आती है, ट्रक्स आते हैं, लोगों में सेंसिबिलिटी वैसे भी नहीं है. ऑब्वियसली कुछ काफ़ी लोगों में है, बट स्ट्रेसर्स किससे आएगा, नेगेटिव चीज़ों से आने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इनिशियल सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर डॉक्टर भी ऐसा बोल रहा है कि भाई डिस्टेंपर है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ना बोलो, बट यूज़ योर ब्रेन. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, विदाउट डॉक्टर्स डोंट बी कि डॉक्टर्स तो फालतू में दवाई देते, ये करते वो करते. सो कीप द सेम एटीट्यूड इवन व्हेन इट कम्स टू वेटनरी कंसल्टेशन. ठीक है. बिकॉज दीज आर स्ट्रीट डॉग्स एंड डॉक्टर्स आर लाइक अस. डॉक्टर्स के पास नॉलेज बहुत है, डॉक्टर्स को समझ में बहुत आता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो दिन में 10 पेशेंट्स देख रहे हैं. एंड व्हेन दे गिव एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन, there's a reason why there are tests, blood test, ये test, because they are not superhumans. उन लोगों के पास एक्सरे विजन या ब्लड टेस्ट करने का इंट्यूशन नहीं है. सो फर्स्ट व्हेन दे लुक एट द जनरल आइडिया, सिम्टम्स कौन से किस डिजीज़ को मैच कर रहे हैं. देन दे आस्क यू क्वेश्चंस. नॉट बेस्ड ऑन हाउ ट्रूथफुल यू आर, हाउ एक्यूरेट यू आर, डॉक्टर्स कैन गिव अ प्रिलिमिनरी, मतलब बेसिकली फर्स्ट डायग्नोसिस जो उनको लगता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, राइट. सो नाक में से फ्लेगम आ रहा है, आँख में से डिस्चार्ज आ रहा है, इट कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स. ठंडी है, इट कैन बी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मे बी नॉट समथिंग दैट प्रोग्रेसेस टू डिस्टेंपर, बट ठंडी के टाइम पे काफ़ी सारे केसेस आते हैं डिस्टेंपर के. द फर्स्ट थिंग दैट डॉक्टर्स थिंक अबाउट इफ इट्स लेथार्जी, एपेटाइट लॉस एंड फ्लेगम, रेस्पिरेटरी. अभी कैसा है, डिस्टेंपर जो है दैट कैन ओनली बी गेज्ड बाय अ सर्टेन टेस्ट. that the cost that I got from a doctor was 2000 rupees. वो एक सर्टेन प्लेस पे होता है, ब्लड कलेक्ट करते हैं, एंड दैट टेस्ट इज डन. सो ऑब्वियसली अभी वो बिना वो टेस्ट के तो डॉक्टर कंफर्म कर ही नहीं सकता. सो द फर्स्ट थिंग दैट द डॉक्टर विल चेक आर द फिजिकल सिम्टम्स. बेसिकली जो सिम्टम्स दिख के आ रहे हैं, यू आस्क देम क्वेश्चंस कि कब से ऐसा है, कहाँ रहता है क्या नहीं है. बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू a diagnosis. That also requires you to be very truthful, observant of the dog, and they may not say कि exactly distemper है. They may say कि it can be distemper, and it's perfect. ठीक है. It's not that the doctor is unsure. He just doesn't want to jump to conclusions. ठीक है. Second is, some doctors will say straight away कि भाई distemper बचेगा ही नहीं. Now you may call that pessimistic. There can be a lot of reasons for it. बट देर आर टू काइंड्स ऑफ डॉक्टर्स. एक जो बोलेंगे बचेगा ही नहीं डिस्टेंपर है, एक जो बोलेगा हो सकता है डिस्टेंपर हो. इन दिस सिनेरियो व्हाट यू डू, यू अप्लाई द सेम लॉजिक दैट यू अप्लाई विद ह्यूमन डॉक्टर्स कि भाई हो सकता है ये आईसी बोल रहा है, हो सकता है इसको पैसा कमाना, हो सकता है. दैट इज़ अ वेरी बैड एटीट्यूड फ्रॉम अस, बिकॉज बट देन आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू इडियट्स आर नॉट सेंसिबल. इसलिए मैं तुम्हारा ही रेफरेंस दे रहा हूँ. हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड. Doctors are human beings. They want to go home early. They also get frustrated. They also have the same vices and fallacies like us. They're also not perfect. They also want to earn.
अगर तुम में अक्ल है, अगर तुम ढंग से बोलो, तो वो एटीट्यूड मत रखो, तो सिर्फ ये सोचो कि हाँ, डॉक्टर के पास एग्जैक्ट डायग्नोसिस बिना टेस्ट के नहीं आ सकता। एंड क्योंकि अभी खाली सिम्टोमेटिकली डॉक्टर बात कर रहे हैं, एंड एनीवेज डिस्टेम्पर है, क्योर तो कुछ नहीं, ट्रीटमेंट ही है, तो सिम्टम्स को मैनेज करना ज़रूरी है। डॉक्टर्स भी यही बोलेंगे। नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल दैट आई that has helped me out as a I don't know, animal welfare activist, if you can call me one. 3 केसेस थे, ठीक है, 3 केसेस, सेम सिम्टम, ठीक है, फ्लेगम फ्रॉम द नोज, लेथार्जी, लॉस ऑफ एपेटाइट, आँख में से डिस्चार्ज। नाउ एक डॉक्टर को मैंने कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को बोला इट कैन बी डिस्टेम्पर। दूसरे को कंसल्ट किया, बोला इट कैन बी। बट दोनों ने भी ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया। एक ने थोड़ा इन्वेसिव मेथड यूज़ किया, इंजेक्शंस वगैरह भी दिए थे, और मैंने बोला था कि सलाइन मत देना क्योंकि रोड पे रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स है। यू नीड टू इंश्योर लेस स्ट्रेस। इंक्रीज इन स्ट्रेस, नेगेटिव इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। यू डोंट इवन नो कौन कब खाना दे रहा है, यू डोंट इवन नो और कौन दवाई दे रहा है। सो इफ़ यू कैन stop all meds, contact someone that's influential in that area, in the animal welfare scene, in the committee of the community, if you can, that is. Stop all medicines or coordinate with the other feeders if you can, which I think that's useless, but ठीक है, maybe I'm being pessimistic about it, but okay. तो मैंने बोला कि सलाइन मत दो, क्योंकि सलाइन ठंडा रहता है, ठंडी का मौसम है। अगर इफ़ आई वॉज राइट इन सेइंग कि भाई वो जो जिस वायरस से कोल्ड होता है इनको, उसी से डिस्टेम्पर भी होता है, या जिस वायरस से कोल्ड होता है हमको, उस टाइप के वायरस से इनको डिस्टेम्पर होता है, तो अगर तुमने ठंडी में सलाइन दे दिया और रास्ते पे रखा, तो सीन है, ठीक है। इट कैन प्रोग्रेस वेरी फास्ट, स्ट्रेस इंक्रीज होगा, यू डोंट इवन नो कितना खा रहा है, कब खा रहा है, क्या। एंड एवरी टाइम द मेडिसिन गेट्स एनी मेडिसिन गेट्स मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी गोज अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल कम रखो जितना हो सके, कुत्ते को वार्म रखो, इन्वेसिव मेथड्स मत यूज़ करो बिकॉज स्ट्रीट डॉग्स है। नाउ एक ने इंजेक्शन दिया एक डॉग को, जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने ही प्रिस्क्राइब्ड समथिंग नोन एज हनी टस, जो हम भी यूज़ करते हैं। सो ही चेक्ड लाइक द फर्स्ट डॉक्टर, ही ऑल्सो थॉट कि रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिससे फ्लेगम आ रहा है नाक में, ठीक है। आँख में जो डिस्चार्ज था वो दूसरे डॉग में इतना था नहीं, बट इट कैन ऑल्सो बी द जनरल डर्ट, राइट, और इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू cold. So he gave Hanitas and he prescribed Toxamox. It's an antibiotic. Toxamox नहीं तो मैंने बोला can I use amoxicillin because Toxamox available नहीं है. He said okay fine. So वही 2 चीज़ें हमने यूज़ की 2 डॉग्स पे, हमने मतलब मैंने 2 डॉग्स पे, वो ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। जो तीसरा डॉग था, क्योंकि उसको बहुत, ये मैंने इस डॉग के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है, जो मैंने पहले वीडियो पोस्ट किया था। हिज नेम इज़ डीजू, हिज एक्चुअल नेम इज़ डीजू, पीपल कॉल हिम डीजे। उसके बहुत सारे स्ट्रेसर्स थे, उसको अबैंडन किया था, रैंडम मेडिकेशन चालू थे उसके ऊपर टेम्पो गया था, उसको सोल्यूशन सेंटर में मैंने सेंड किया था, वापस आया था। I mean, I don't even know, maybe he was given saline at some point, I don't know actually, but lot of stressors, multiple medicines, and lot of ups and downs. So maybe his distemper progressed a bit, I don't know, but his hind legs were wobbly. बट क्योंकि उसके मेडिकेशन हमने बीच में स्टॉप किए थे एंड प्रॉपर एक कोर्स उसका कंप्लीट किया था, उसका नेज़ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था वो ठीक हो गया था, उसका नोज़ में से जो डिस्चार्ज था वो ठीक हो गया था। ही सीम टू हैव कम बैक टू गुड हेल्थ एंड देन ही कोलैप्स्ड अगेन, ठीक है। उसको वापस से इन्फेक्शन हुआ रेस्पिरेटरी का, उसका वॉबली लेग होना शुरू हो गया, बट नाउ हिज इन्फेक्शन इज़ गॉन, हिज मेड्स ऑन, समवन टुक हिम समवेयर एट हिज होम, गुड थिंग। उसका लेग वॉबली, इवन दो आई डोंट एग्री विद टेकिंग स्ट्रीट डॉग्स होम, बट ठीक है, उसको अभी ज़रूरत था। लेकिन कैसा होता है, एक होता है डिस्टेम्पर, एक होता है कोरिया डिस्टेम्पर। सम डॉक्टर्स से दैट टू आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एंड फ्रॉम व्हाट सम डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी। डिस्टेम्पर प्रोग्रेस हुआ, ख़त्म हुआ। जब डिस्टेम्पर प्रोग्रेस होते होते रुक जाता है एक पॉइंट पे, एज अ बॉडी फाइट्स and is able to deter the virus or able to
stop the infection. तो जो तो जो डैमेज होता है उसी के साथ में कुत्ता जीता है, उसको बोलते हैं कोरिया. दिस ट्विचिंग इन इट, ट्विचिंग रहता है उसमें, राइट. There are so many dogs that I've seen that look completely fine, fit, fighting, happy, jumping, but then during the winter time, you can see a slight twitch on their forehead. That's when I realized कि इसको तो डिस्टेम्पर था, है मतलब कोरिया. सो मे बी डीजे का वो सीन है, अभी डीजे का लेग वॉबली हो चुका है, मे बी, आई डोंट नो. इट्स अ न्यूरोलॉजिकल इशू, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है. एंड in a neurological issue you can also see that the eyes are a little weird, but डीजे का पहले से eyes weird था वैसे. सो क्योंकि इसका पूरा जो सीन है हेल्थ का डिटेरियोरेशन, डीजे का जो है वो 1 महीने के ऊपर हो गया उस सीन को. अगर डिस्टेम्पर होता मर गया होता है अब तक. तो क्लियर सी बात है कि डिस्टेम्पर का केस तो नहीं है ये, या तो कोरिया में या तो कुछ और है. ही हैज़ बीन टेकन टू डॉक्टर अगेन, उसका सब कुछ वापस चेक हुआ है, इज बैक. बट द सो इवन दिस केस, इसमें भी हमने सिम्टोमेटिक ही किया था, जो भी किया था हमने, मतलब डॉक्टर्स ने, हमने. बट द रीज़न ऐसे हमने इज़ बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट डॉग्स, डॉक्टर्स आर नॉट द प्राइमरी people. They are consulted. Who are the primary ones? The caregivers, the caretakers. It's on us. Doctors are consultants. हम जा रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं. डॉक्टर को नहीं पता कि हमारे अलावा और कौन दवाई दे रहा है. डॉक्टर को नहीं पता कि डॉग का हिस्ट्री क्या है. डॉक्टर को नहीं पता कि डॉग कहाँ रह रहा है, कौन खिला रहा है, क्या दवाएं चालू ऑलरेडी. So it's on us to be truthful with the doctor, and it's on us to keep the dog with less stress. In less stress, you need to understand one thing very clearly. Don't jump to conclusions. सीधा डिस्टर्ब बोलने की ज़रूरत नहीं है. डॉक्टर्स को कम्प्लीटली सुनने की भी ज़रूरत नहीं है. You have to bank on the doctor's knowledge, but more than that on the doctor's sensibility. कुछ डॉक्टर्स रहते हैं जो एकदम एग्रेसिव रहते हैं, इन पहले से टेस्ट बोलना शुरू कर देंगे. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब कुत्ता रोड पे है, डॉक्टर के लिए पेशेंट है, डॉक्टर के लिए ही इज़ लाइक सॉल्विंग अ केस. बट यू नो कि वो जो कुत्ता है उसका टेम्परामेंट क्या है, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. स्ट्रीट डॉग्स में पेशेंस रखो, ऑब्जर्वेंट रहो, एंड अंडरस्टैंड कि you need to be less invasive with the dogs, and you need to either increase the comfort of the dog or maintain the comfort of the dog. You don't have to increase the stresses at any cost. Keep it as less invasive as possible. Keep it as comfortable for the dog as possible. That's very important. इन लोगों का वापस झगड़ा शुरू हो गया. You need to understand these things. Okay. Symptomatic treatments are very important. Avoid taking street dogs home as much as you can. एक point के बाद अलग चीज़ है. Don't bank on NGOs. Don't bank on shelters. Don't bank on anyone who's a professional in animal welfare, because either they are very much occupied, like preoccupied, or overly occupied, or they have some things that will, you know, that will result in it being a surprise that they have taken your case. मतलब वो नहीं लेते, मतलब वो इतना, वो बहुत कम है, like it becomes rare then. So for whatever reasons, maybe I'll explore that in some other video. But understand this, don't jump to conclusions, never jump to conclusions. ये देखो कहाँ से आया ये. So understand this. एक डॉग है जो ऐसे इसी से भाग के गया, ऐसे एक वाइट डॉग है, ठंडी के टाइम पे दिखता है उसका ट्विचिंग. अंडरस्टैंड दिस. एक बार डिस्टेम्पर ब्रेन तक पहुंच गया ना, तो कोई उसका कोई है ही नहीं, मतलब वापस जा ही नहीं सकता वो. It all depends on the immunity. Distemper, like any virus, is only handled by immunity. There's no cure for it. There's only symptomatic treatment. You support the body fight the virus. You don't primarily fight the virus. So understand this. Sterilization, vaccinations, awareness. If it's winter, be ready to hear about pups' deaths. Don't jump to conclusions. Trust the doctor's knowledge, but look for sensibility in a doctor. Always have this space of benefit of doubt for the doctor. Understand that doctors are not superhumans. That's why there are tests. Understand that you have to maintain or increase the comfort level of the dog. Stress
plays a very big factor in how the dog fights the virus. Don't jump to conclusions. Understand that you're not the only one feeding in the same way, you're not the only one giving medicines. Either your network of feeders should be very, very open, honest, integral, or you need to be very careful about how you treat the street dogs. ये तुम्हारे घर के कुत्ते नहीं है, इन्हें वैसे मत ट्रीट करो. Avoid medications. Food is a miracle in this case. Food, comfort, joy, happiness, all these things. That's it. Thank you.